Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of November. The session will be quite interesting and important, and it will be very beneficial for all the students who are preparing for competitive exams. In this video students, we will be talking about Bhu portal that has been recently launched by the government. Then Finance Ministry, they have unveiled a PLI scheme for the senior executives of public sector banks. Then we will be talking about first Sagarmanthan, the Great Oceans Dialogue that was held in New Delhi. Next thing is Indian Air Force, we will be talking about them. Then India has ranked 10th position from 7th that was in 2023. So we have seen a drop in which position we will be discussing in this video. And Food and Agriculture Organization, they have warned the global hunger is increasing in the world. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch, and students, we make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, then weekly current affairs video, then monthly current affairs video, as well as the topic wise is uploaded on time, so it can help you in your preparation. So now students, let's move to our content. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So let's start with national affairs. Government has launched Bhu portal for managing the groundwater withdrawal permits. See, we know that the groundwater, right, is one of the major source of water for daily use, for bathing, for clothes, or for your kitchen utensils, or for making food, and even for drinking, right? So this water is declining. That means we are seeing that this is your land, this is your soil, then dust, then your rocks, then there is groundwater below. So if more number of such hand pumps will be installed, then the level of water will go down, correct? And government has launched this Bhu portal for the same reason, that the groundwater that is declining in multiple areas in India, that can be reduced, right? And here they have launched a portal for managing the groundwater withdrawal permit, correct? Here you can see Union Minister Chandrakant Raghunath, right? He is our Union Minister of Jal Shakti, and he has digitally launched this portal. That is, portal means it is a website. It is Bhu portal, right? This was launched during the closing ceremony of the 8th edition of India Water Week. Now, where was this India Water Week held? This was held at Bharat Mandapam, the very famous, in New Delhi. Then this was held from when to when? It was from 17th to 20th of September that we observed this 8th edition of India Water Week held at Bharat Mandapam in New Delhi, during the closing ceremony of which here Chandrakant Raghunath has launched this Bhu portal, right? This is a portal that will be providing efficient groundwater regulation across the country. This has been developed by which organization? It has been developed by Central Groundwater Authority, that comes under the Ministry of Jal Shakti, along with NIC, that is your National Informatics Center. It is a one-stop platform for all the managing of all the regulations, the certificate, the permissions that are required to maintain the transparency can be managed through this portal. Correct? Take a note of it. Next is Finance Ministry. They have launched a PLI scheme. PLI is your performance linked incentive scheme. That means if you are performing good, if the numbers, the balance sheet is good,
then we can see that you will be provided with additional compensation in simple terms, or will be provided with additional benefit. So it is Ministry of Finance, they have unveiled this PLI scheme, that is performance linked incentive scheme, and this will be basically promoting the employees, right, so that their creativity in work can enhance, their performance can be much better than earlier, right? If we talk about this previous LI scheme was restricted only to whole-time directors, managing directors and CEOs and executive directors, and now it has been launched for employees also, right? Senior executive employees. Next, for being eligible to this, in order to be eligible here under this scheme, every bank has to meet at least 3 out of the 4 criteria, that includes positive return on assets, net performing assets at not more than 1.5%, or if in net NPA is more than 1.5%, then reduction of 25 basis point or more in the opening net NPA of the financial year, right? Then is other criteria that includes your cost to income ratio should not be more than 50%. And if we talk about the capital to risk weighted asset, that is CRAR ratio, as per the minimum regulatory requirement plus 200 basis points or more. Next is Sagarmanthan. Right now, what is this Sagarmanthan? Why we are discussing about it? Right, first thing first, this is the inaugural edition and the first edition of the Sagarmanthan, the Great Oceans Dialogue. This is basically South Asia's Sagarmanthan, largest maritime thought leadership summit. It was held from 18th to 19th of November. It was held where? At ITC Maurya. It was held in New Delhi. Correct. Now question can be asked is that this Sagarmanthan, right, this Oceans Dialogue, right, it was organized by whom? It was organized by Ministry of Port, Shipping and Waterways. So who organized it? Ministry of Port, Shipping and Waterways. Correct. Along with this, you need to remember a global think tank. It is New Delhi based. That is your Observer Research Foundation, right? And this was organized basically so that the maritime cooperation can strengthen. You can see partnership in between different countries in South Asia so that the maritime sector can grow and flourish, and even by maintaining or by following the sustainable development goals. Correct. Then this event focused on 4 main themes, that is new frontiers, blue growth, green and blue, and coast and communities, right? And to address the challenges that are related to it. Also remember, our country, India, is planning to invest $82 billion in port infrastructure by 2035. This will include the establishment of a Vadhavan port that will be in Maharashtra. Next, one more thing, remember, as we are talking about the maritime sector here and to protect it and to grow it, if we talk about India's maritime sector, India handles almost 95% of the country's trade by volume and 70% by value. With 12 major ports in India and over 200 minor ports in India, we are the 16th largest maritime nation and a leader in the shipping lanes, right? Because we know we are the largest populated country, or we have the most population, right? We know this, and with this the consumption of India also increases, right? And if the consumption is increasing, that means we need more money to sustain our population, and there are multiple products in the market that we do not produce, so we have to import them. Correct. And that is the reason, as the population is growing, right, we India as a nation, we need to start manufacturing multiple products in India. Then that is the reason that Prime Minister Narendra Modi is popularizing in India that make in India, right? We should be Atmanirbhar. That means we should be sustaining ourselves. We should not rely on other countries, be it for defense, be it for technology, or be it for any other, even healthcare, right? So we should be self-sufficient, and that is the reason we are also promoting the MSMEs, which will not only cater to the in-house demand, but also we will be making sure that these MSMEs, their products are of top quality, as they will be sold in the market, and these can include your various manufactured products or the services, because we know that IT service is the largest service in, or one of the largest revenue generating sector for India. Next is Indian Air Force. They have signed MOA.
What is MOA? It is Memorandum of Agreement. So in Indian Air Force, they have signed this Memorandum of Agreement with IISc and FSID to advance science and innovation. See, we know that now machine learning, artificial intelligence, drone technology, even mechanical robots, right? Electric vehicle, EV cars specifically, then cloud infrastructure, right? These things are growing. Even in the space sector, you are seeing that multiple science and development is required, research and development is required, right? So that better and better use cases can be found out. So Indian Air Force, right, along they have signed a memorandum of agreement with IISc of Bengaluru, Karnataka, and Bangalore based only FSID, that is Foundation for Science, Innovation and Development, right? This was during a ceremony that was held in Bengaluru through base report. Just remember that it was held in Bengaluru, right? This agreement, what it will do is this will promote research and development. It will promote better testing facilities to the organization, right? This will be making sure that the academic collaboration is better and better academics can be provided to the individuals. Here you will be seeing AI, machine learning, and I have also signified multiple other reasons, because if we are sufficient in technology, right, we can see that there can be tremendous changes. Next is, if we talk about Indian Air Force, who is the Chief of Air Staff? Air Chief Marshal Amarpreet Singh. Okay, I'll give you a homework. What is the motto of Indian Air Force? Tell me the motto. Next is International Affairs. CCPI 2025. Here India has ranked 10th position and has dropped from 7th in 2023. Right? So what is this CCPI? That is your climate change performance index, right? It is for 2025, and in this our country India is at the 10th position. Correct? Earlier in 2023 we were having a better score, that was 7, but now it is 10. So see, even few last week, I guess, there was a report that stated that our country India, right, it is lagging on various sustainable development goals, especially the cleaning part, following the sustainable development goals, as well as the making sure that the finance, the initiatives and the implementation of that initiatives going towards the climate sector is less, that we are not contributing, be it monetary wise or be it by initiatives, we are not contributing that much to the climate change, or we are not contributing towards conserving our environment, right? So coming back, India stood at 10th position in this, and this CCPI index was released during the 29th COP that was held in Baku, Azerbaijan. Then here you can see the index has left the first 3 places empty, as no country has performed well enough so that they can achieve a very high score rating, or not have performed well enough to follow all the guidelines. Thus, at the 4th position is Denmark, then Netherlands on 5th, then UK on 6th. Moving on, if we talk about this index is published annually since 2005, and by 3 environmental NGOs, that is German Watch, New Climate Institute and the Climate Action Network International. Next is UN Food and Agriculture Organization. They have warned about the global hunger soaring, with 152 million more affected since 2019. And what did we saw after 2019? It was COVID-19. We saw lockdown, right? And because of this, we are seeing, right, many businesses were shutting down, and because of this, right, it becomes very difficult for the individuals to sustain their families, right? They can also move back to poverty. Then before that we saw multiple other things, right? But being the largest populated country, not just in India we are talking about in this video, but or in this topic, but on general scale, if we talk about whole of earth, we will be seeing that the number of people who live below poverty are increasing, because of which the hunger is increasing, right? And we are not able to feed all the people who are below this. Also, you are seeing that our country India, right, government claims that we are feeding more than 80 crore people annually, right, by providing them with free rations.
Next, if we talk about global food production, here you can see, but before moving on this, remember this report was released at the 5th United Nations World Data Forum held in Colombia from 12th to 15th of November. Right, here is the alarming trend indicates that is seen that the target of United Nations that was to achieve zero hunger by 2030 is not on the track. As per the report, hunger has affected 9.1% of the global population in 2023, which is more than 7.5% in 2019. Over the last 2 decades, the global agriculture value has also increased by 89% in real terms, reaching 3.8 trillion in 2022. If we talk about UN Food and Agriculture Organization, where is the headquarter? The headquarter of this is in Rome, Italy. Right, if we talk about the global food production, as per the report, the global production of primary crops reached 9.6 billion tons in 2022, up by 56% compared to 2000. Crops like sugarcane, maize, wheat, rice together accounted for approximately 50% of the global crop production. Next is banking and finance. SBI unit to raise climate fund as 2000 crore rupees. So similarly, this fund will be investing in various projects that are related to clean energy, that will promote our, or that will make sure that we conserve our environment, right? So this Mumbai Maharashtra based State Bank of India, they will be raising $237 billion or 2000 crore rupees through their third climate fund to the investors who are familiar with the matter. Next is economy and business. ICRA, that is your India Credits Rating Agency, they have recently released a data that stated that India's GDP growth likely to at 6.5%. That is for the second quarter of FY25, right? And but they have retained their suggestion, or they have retained their expectation for FY25 to be at 7%. See, in inflation is also rising this month, and we have discussed this multiple times. The food inflation is also rising. Correct. Next, here you can see ICRA, right? They projected at 6.5% in the second quarter of FY25. Next is awards and recognition. Daniel Barenboim, right? As you can see him in Daniel Barenboim and Ali Abu has been awarded with the Indira Gandhi Peace Prize for 2023. Right, first of all, you should know that why Indira Gandhi Peace Prize is given, right? This award is given basically to promote peace, right, for promoting development and for disarmament, that means reducing the arms, the nuclear weapons, right, and so on. So this Indira Gandhi Peace Prize is given in these three categories, right, who have worked toward these initiatives. And here you can see Daniel Barenboim and Ali Abu, they have been honored with this Indira Gandhi Peace Prize award for 2023. Take a note of this. If we talk about Daniel, he is 82, right, and he was born in Argentina, correct. He is a Israeli pianist and a conductor who has noted for his musical talent, right. And then Ali Abu, he is 52, a prominent Palestinian peace activist who worked towards peace building. Then in this Indira Gandhi Peace Prize, a monetary benefit is also provided of 25 lakh rupees with a citation. This award was established in 1985 and but it was given since 1986. Next is Indian musician Ricky Cage and Anushka Shankar has been nominated at the 67th Grammy Awards 2025. So Indian music composer and environmentalist Ricky Cage and Anushka Shankar, a British American sitarist and Indian musician, have been nominated at the 67th Grammy Award. This was announced by California based Recording Academy. A 3-time Grammy winner Ricky Cage has earned his 4th nomination for his album Break of Dawn. Next is appointments and resignation. As you can see him in the picture, Abdullah Nigamtovich Aripov has been appointed as the Uzbekistan's Prime Minister for the 3rd consecutive term. Take a note of it. Then he started his position first term in December 2026. December 2016. Next is LDP, that is the leader of the Liberal Democratic Party. Shigeru Ishiba has been re-elected as the Japan's Prime Minister. So here we saw that Abdul Nigamtovich Aripov has been re-elected
for the third consecutive time as the Prime Minister of Uzbekistan. And here we are seeing that Shigeru Ishiba has been re-elected as the Japan's Prime Minister. Next is science and technology. DRDO's SSPL has developed SIC. What is this SSPL? SSPL is your solid state physics laboratory, right? This is a DRDO unit that is based out of in New Delhi, and they have developed a silicon carbide wafers and your gallium nitride HEMT. HEMT is your electron mobility transistor, right, along with monolithic microwave integrated circuit. So many things to remember here. Remember, this is what? This is a chemical compound, right? So not a chemical, this is a compound. Similarly, gallium nitrate, it is also a compound, and using these two compounds we have done two different things, right? First is your which organization did it? Solid state physics laboratory, DRDO unit. They developed various indigenous technologies for manufacturing silicon carbide wafers, first thing. And second is using the gallium nitrate high electron mobility transistors will be developed for various circuits, your chips, your electronics. Next is related to sports. Women's Asian Championship trophy was held and India has beaten China in the final. Right? We are talking about what? We are talking about Women Asian Championship. Next thing can be asked is that where was this Asian Championship, Women's Asian Championship held? So where was this Women's Asian Championship held? It was held in Bihar. It was held in our India in Bihar. This was the 8th edition of the Women's Asian Championship trophy held from 11th to 20th of November in Bihar. Correct? And India has secured the first position. That means we have won it. Correct? Second, who was on the position? It was China. We have defeated China in the finals. Next is, if we talk about this, it was the 8th edition as we saw, and this is the second consecutive time that India has hosted the Women's Asian Championship trophy. Next is Spain's Rafael Nadal retired from tennis after Davis Cup. Right, we know, we have discussed this earlier also, the legend Rafael Nadal, right? He is from tennis, he is from Spain, and he's 38 years old, and he has now retired from the professional tennis. Correct? Apart from this, remember, he was playing his final event, that is your Davis Cup, that was scheduled to be held in Spain only. Correct? Take a note of this. Then if we talk about him, he has won gold medal in Olympics in 2008 Beijing. He started his career in 2001 at just the age of 15, right? And apart from this, he also won the US Open in 2010 by defeating Djokovic at that time in the finals, right? Apart from this, he has won this Davis Cup, that was his last event, multiple times in 2004, 2009, 2011, 2019. Then multiple awards he has been awarded with multiple awards also. Next is Obituary. Renowned Mridangam. This is an instrument, right? It is similar to that of a tabla only, right? Renowned Mridangam scholar Varadarao Kalamkara Rao has recently passed away, right? He passed away at the age of 88 and he was born in Andhra Pradesh. He has received awards such as your Central Sangeet Natak Academy Award. He has also received the President's Medal from then President Sarvapalli Radhakrishnan. Next is your important days. World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day observed on 20th of November, and it is basically observed on the third Wednesday of November month. This is to raise awareness, exchange knowledge and explore strategies to reduce the impact of COPD, that is your World Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Right, this year in 2024 we observed it on 20th of November. There is a theme for this day, theme being Know Your Lung Function. Right, for the first time this was observed in 20th of November, on 20th of November 2002. Next is National Newborn Week is observed from 15th to 21st of November, and this day is basically observed to create the awareness about the importance of newborn health and its key criteria, right? Because it is the important criteria, right? That in the early stages and the early years of the life, right, the child should be secure and safe and healthy. Then there is a theme here, the theme being
safety, quality and nurturing care, birthright of every newborn. Next is World Philosophy Day, observed on 21st of November, and it is to create the awareness about the value of philosophy, right? Because it is different for different individual, right? And it is for where different cultures have their different philosophies, right? And for each individual is also having a different philosophy, right? Also to create the importance of the same, UNESCO, right? It is UNESCO that observes this World Philosophy Day. It is observed on 3rd Thursday of November month, and this year it was on 21st of November. Next is state news. Bihar's Sultanganj railway station set to be renamed as Ajgai Binath Dham. I repeat, the Sultanganj railway station will be renamed to what? Ajgai Binath Dham, right? So this Sultanganj railway station, it is in the Bhagalpur district of Bihar, will be renamed after a Hindu shrine Ajgaibnath Ajgaibnath Dham, right? That is an ancient temple of Lord Shiva located in Sultanganj on the banks of river Ganga. So that's all for the day, students. Now let's move to the one-liner revision. Government has launched Bhoonir portal for managing groundwater withdrawal permits. Then Finance Minister has unveiled the PLI scheme for senior executives of public sector banks. Then first Sagarmanthan, the Great Oceans Dialogue held in New Delhi to foster global maritime cooperation. Then Indian Air Force has signed an MOA with IISc and FSID for advancing science and innovation. Then CCPI was released and India's rank was 10th in this. Then FAO, that is United Nations arm, has warned about the global hunger rising with 152 million more affected since 2019. Then SBI unit to raise climate fund worth 2000 crore rupees. Then ICRA, they have released India's GDP growth data that India will be growing at 6.5% in the second quarter of FY25. Then Daniel and Ali Abu has been honored with the Indira Gandhi Peace Prize for 2023. Then Indian musicians Ricky Cage and Anushka Shankar has been nominated at the 67th Grammy Awards for 2025. Remember, then Abdullah Apripov has been appointed as the Uzbekistan's Prime Minister for third consecutive term. LDP leader Shigeru Ishiba has been re-elected as the Japan's Prime Minister. So next is DRDO's SSPL. They have developed SIC warfare and GAN HEMT, right? What is SIC and what is GAN? Silicon carbide, and GAN is your gallium nitrate. Then Women's Asian Championship Trophy held in India in Bihar, right? And India has secured the first position, China second, and India beats China here. Then Spain's Rafael Nadal has retired from tennis after Davis Cup. Renowned Mridangam scholar Varadrao Kamalakara Rao passed away. Then World Chronic Obstructive Pulmonary Disease observed on 20th of November. National Newborn Week from 15 to 21st of November. Then World Philosophy Day on 21st of November. And Bihar's Sultanganj railway station set to be renamed as Ajgaibnath Dham. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part. Which organization reported the increase in the digital payment index to 445.5 at the end of March 2024, reflecting a 12.6 year-on-year growth? It is Reserve Bank of India. Right, take a note of it. Next, which organization or bank has recently entered into a co-lending partnership with C2 Trends and Ugro Capital to facilitate loans to the MSME sector? It is SIDBI. So SIDBI, they have entered into a co-lending partnership with C2 Trends and Ugro Capital in order to provide loans to the MSME sector. Right, take a note of this. Next, which organization has recently collaborated with Bank of India to facilitate easy financing for rooftop solar installations and establishment of electric vehicle charging station? So for rooftop photovoltaic solar panels installations and for the setup or full infrastructure of electric vehicle charging station, for this, which organization has collaborated with Bank of India? It is Tata Power Solar Systems Limited. They partnered with Bank of India in order to provide financing for these two setups. Next, SEBI's chairperson Madhabi Puri Butch
recently launched India's first website for passive funds, and this website was launched where? It was launched at National Stock Exchange, right? Apart from this, remember, this will facilitate comprehensive platform for retail investors, and this will allow them to, or it will help them to easily access information and understand the Indian passive industry. Next, which company has recently received the composite insurance brokering license from IRDAI? So, which is that organization? It is Insurance Dekho. This license will allow this organization to offer reinsurance brokering services alongside their existing insurance brokering offering. Next, which bank has recently, in partnership with Goki, launched the Smart Vital Plus smartwatch for contactless payment? It is Kotak Mahindra Bank, right? This is a leading Indian private sector bank. They, in partnership with smart tech-enabled healthcare platform Goki, they have announced the launch of Kotak Goki Smart Vital Plus smartwatch. It is a wearable and a contactless RuPay on-the-go payment solution. It was powered by National Payment Corporation of India. The introductory price of this website of this watch on the website is around 3,499 rupees. Next, which bank has recently partnered with Swift to launch an artificial intelligence driven pilot to help combat payments and frauds occurring in the cross-border payments? So it is which bank? The bank is Axis Bank, right? Axis Bank partnered with Swift. Now, what is Swift? Swift is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. This AI-driven pilot project is expected to provide a very secure infrastructure that will allow the financial institutions to exchange important information along with privacy-preserving models. Next, Government of India and World Bank, they have recently signed how much amount agreement to construct the Green National Highway Corridor project? So, Government of India, they have recently partnered with World Bank and have signed an agreement worth $500 million, and this is basically to deploy or to make safe and green highways. Safe and green highways, right? Take a note of this. Next, which Indian firm has recently partnered with Vested Finance to offer access to global investing for Indians and NRIs? So, in order to give access to or access or invest in India to access it global options, global sectors, global markets, it is HDFC Securities, right? They have partnered with Vested Finance to offer global investing options to Indians and NRIs. Next, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? So, which type of cooperative banks are covered? It is urban cooperative bank and state cooperative banks. These two cooperative banks are covered under the revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity, right? And these revised instructions, they will act as a one-time measure to provide rectification and smooth transactions to an AS compliant approach. Next, with which organization did Thomas Cook India's limited partner to launch the RuPay AED Forex card for Indian travelers visiting UAE? So, with which organization did Thomas Cook India Limited partner to launch this RuPay AED card? So, which is that organization? NPCI, National Payment Corporation of India. And this innovative Made in India initiative is a first of its kind partnership with any Indian non-banking entity. Next, SEBI directed Dash to value their investments in the 81 bonds issued by bank on yield to call basis. So, SEBI, they have directed which organization? They have directed the mutual funds to value their investment into 81 bonds issued by banks on the yield to call basis. These 81 bonds, these bonds are known as the perpetual debt instruments, which are issued by the banks to raise money and to build up their core equity capital. This yield to call, YTC, right? It is the expected return percentage by the investor. Next,
Reserve Bank of India issued master directions on the treatment of willful defaulters and large defaulters to scrutinize all NPA accounts that have outstanding amounts of how much? That have an outstanding amount of 25 lakh rupees or above. Right, this will set up a transparent and non-discriminatory framework that will allow the willful defaulters and also disseminate the credit card information about the willful defaulters to the caution lenders against further financing to them, so that the people who organizations that are financing such defaulters, that thing cannot happen and more money cannot go to them because they are not even paying the money that they borrowed earlier. Next is our homework section, student. First homework is your tell me recently government has launched, or we can say not this, let me ask you another question. Who inaugurated the 83rd Indian Road Congress and where was it inaugurated and by whom? Second, tell me recently International Poultry Expo was held where? Third, tell me recently which organization hosted International Ancient Arts Festival and Symposium and what was the edition of it? So these are your 3 homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Also, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Now students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूनीर पोर्टल की, देन हम बात करेंगे पीएलआई स्कीम को भी लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। देन हम बात करेंगे पहले सागर मंथन के बारे में, द ग्रेट ओशंस डायलॉग जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुआ भारत मंडपम में। देन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है आईआईएससी एंड एफएसआईडी के साथ। देन सीसीपीआई की बात करेंगे 2025 की इंडिया की रैंक, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हंगर के लेके एक चेतावनीजनक यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है सुबह 5 बजे डाल देते हैं। देन वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज ये हम मेक श्योर करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी लर्निंग और अच्छी हो सके। चलिए स्टार्ट करें। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टूडेंट, शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स के साथ। हम बात करेंगे भूनीर पोर्टल की। गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया है भूनीर पोर्टल को। पोर्टल है तो हम कह सकते हैं ये एक वेबसाइट है, राइट। एंड इसका एम क्या है कि जो ग्राउंड वाटर परमिट्स हैं, राइट, उनको मैनेज करना है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्राउंड वाटर है, राइट, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, राइट। एंड उसको रोकने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये किनके द्वारा लिया गया? हमारे यूनियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। देन ये लिया कब गया? ये क्लोजिंग सेरेमनी थी आपकी 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक की। इंडिया वाटर वीक हुआ कहाँ पर था? इंडिया वाटर वीक का इवेंट हुआ था आपका भारत मंडपम में इन न्यू दिल्ली, ठीक है।
तो नेशनल अफेयर्स का सबसे पहला क्या था, भूनीर पोर्टल, आपको याद रखना है। ये पोर्टल को बनाया किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको यहाँ पे बनाया गया था। ये जो पोर्टल है ये फंक्शन करेगा एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्राउंड यूसेज के ऊपर डाटा मिलेगा, राइट। एंड जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको चाहिए वो आप इसी पोर्टल से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है, ताकि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे, जो गाइडलाइंस लाई जाएंगी कंपनी के द्वारा या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, अगर वो उनको मीट करते हैं तो उनको भी यहाँ पे बेटर, मतलब उनको भी यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पहले ये जो आपकी स्कीम थी, राइट, ये ऐसे इंसेंटिव्स की, राइट, वो पहले आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती थी, राइट, एंड वो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीईओज जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए थी। अब ये यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी लाई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे बात कर सकते हैं आप, यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, कौन यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, कौन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पहले सागर मंथन, राइट, पहला है मतलब इनॉग्रल एडिशन था ये सागर मंथन का, द ग्रेट ओशंस डायलॉग का। कहाँ पर हुआ था ये ग्रेट ओशंस डायलॉग, ये आपका आईटीसी मौर्य में हमें देखने को मिला था, राइट। करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने पहले कहीं पे अगर आपको भारत मंडपम का है, तो ये जो डायलॉग था सागर मंथन आईटीसी मौर्य में हुआ था, न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, अलॉन्ग विद एक दिल्ली का ग्लोबल थिंक टैंक है ओआरएफ के नाम से, जो कि है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, राइट। एंड इनको लॉन्च किया गया था, बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया था इस डायलॉग को, ताकि जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है साउथ एशियन रीजन में, हम उसको और ग्रो कर सकें, हम उसको बेटर मेंटेन कर सकें, राइट। एंड हम उसका जो इन्वायरमेंट के गोल्स हैं कंजर्व, बेसिकली उसको कंजर्व करके ग्रो कर सकें। अगर इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर की बात करूं, हम हैंडल करते हैं 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, विद 12 मेजर पोर्ट्स एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स के साथ हम 16वें लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है एंड इज़ अ लीडर इन द ग्लोबल शिपिंग लेन्स। हमारे पास 1530 से भी ज़्यादा यहाँ पे शिप्स की देखने को मिलती हैं। एंड इसी के अलावा हम जानते हैं कि ट्रेड इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, एमएसएमईज को ग्रो करने की हम बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है बोथ प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज का, उसमें हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स, इनके द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है आईआईएससी एंड एफएसआईडी के साथ, ताकि जो साइंस एंड इनोवेशन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो हमारे यूज़ केसेस डेवलप होने चाहिए नई टेक्नोलॉजी को लेके, राइट, देन उनको जनरल पब्लिक तक ले जाने के लिए, राइट, कैसे वो हमारी डे टू लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बेटर रह सकते हैं, साइंस का उनमें क्या योगदान रहेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब हम देख रहे हैं चैटबॉट्स आ गए हैं, एआई चैटबॉट्स आ गए हैं, हम देख रहे हैं ड्रोन्स आ गए हैं, एआई कंट्रोल ड्रोन्स आ गए हैं, जनरेटिव एआई की बात की जा रही है, देन मशीन लर्निंग, राइट। इसी के साथ साथ और अगर हम देखें जैसे कार से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, फिर हम देखें तो स्पेस को लेके बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ रहती हैं, स्पेस से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड, बेटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट, उसके ऊपर। तो इन सब में साइंस की ज़रूरत है, इनको ग्रो करेंगे तो हमारा सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे, तो इसीलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर, तो अभी सीसीपीआई को रिलीज़ किया गया है। ये सीसीपीआई क्या है, सीसीपीआई है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड 2025 का रिलीज़ किया गया है। इंडिया की 10th पोजीशन रहेगी यहाँ पे। इंडिया को अच्छा नहीं माना गया कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, राइट, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, राइट, रिन्यूएबल सफाई मेंटेन करने के लिए। इवन आप अभी देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, राइट, इवन मुंबई में भी अभी न्यूज़ आई कि वहाँ पे स्मॉग देखने को मिली सुबह सुबह, राइट, वो फॉग भी हो जाती है लेकिन स्टिल वो पॉल्यूशन फिर दिखता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है अपने एफर्ट्स पर यहाँ पर, अगर हम देखा जाए। इवन इस अगर लिस्ट की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट थी कि पहली 3 पोजीशन पे तो किन्हीं को रखा ही नहीं गया, खाली छोड़ा गया। रीज़न बीइंग कि किसी भी कंट्री ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी यहाँ पे कि उनको टॉप 3 कंट्रीज़ में रखा जाए। तो डेनमार्क, देन आ जाता है नीदरलैंड्स, देन आ जाता है यूके। तो 4th, 5th एंड 6th पोजीशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर।
अगर हम इस इंडेक्स की बात करें 2005 से हर साल इसको प्रेजेंट किया जा रहा है 3 एनजीओज के द्वारा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट आ रहे हैं फिर यूनाइटेड नेशन का हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने वार्न किया कि जो ग्लोबल हंगर है वो हमें बढ़ती हुई दिखी 152 मिलियन से सिंस 2019, मतलब भुखमरी बढ़ी है, राइट। लोगों को जो प्रॉपर मील नहीं मिल पाती दिन की, राइट, वो हमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, राइट। लोगों के पास प्रॉपर पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता है, राइट। बहुत अनहाइजीनिक पानी वो ड्रिंक करते हैं, कहीं से भी गंदा पानी पी लेते हैं, राइट। तो इन बहुत संख्या यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। एंड इवन ये कोविड-19 के बाद आपने देखा लॉकडाउन लग गया था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अगर हम ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 9.6 ट्रिलियन रीच करी 2022 में, अप बाय 56% कंपेयर टू 2000। करेक्ट। यहीं पे बात करें, ये जो रिपोर्ट थी ये 5th एडिशन ऑफ यूएन वर्ल्ड डाटा फोरम जो कि कोलंबिया में हुआ था 12 से 15 नवंबर तक, उसके दौरान रिलीज़ की गई। एंड यहाँ पे अलार्मिंग ट्रेंड्स के बारे में बताया गया ऑफ, और जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको अचीव नहीं कर पा रहे, ऑफ यूएन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 जो कि है जीरो हंगर बाय 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो एसबीआई अभी रेज कर रहा है क्लाइमेट फंड के लिए 2000 करोड़ रुपए, ये है आपके $237 बिलियन, राइट। कि हम एनवायरनमेंट के सुख को लेके काम करेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर हम फंडिंग लगाएंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे उसको क्लीन करने के लिए जो भी फैक्ट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है, जो भी R&D की ज़रूरत होती है, हम वो करके हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट और बेटर हो सके, कि हमारा क्लाइमेट और अच्छा हो सके। देन SBI वेंचर्स लिमिटेड, ये यूनिट है SBI की, इन्होंने ये प्लान किया टू रेज दीज फंड। देन आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर, ICRA क्या है? इंडियाज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट। इन्होंने इंडिया की GDP 6.5% बताई है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। वहीं पे इन्होंने बोला कि अगर FY25 एज अ होल की बात करें तो हम 7% से यहाँ पे ग्रो करेंगे, एंड इन्होंने इसको रिटेन करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं ICRA की, अगर मैं बात करूँ तो MD एंड CEO कौन है? रामनाथ कृष्णन। और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा ICRA का? ये है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। डैनियल एंड अलियाबू, इनको ऑनर किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 से। तो वो ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है ना, ये आपका दिया जाता है जिन लोगों ने पीस को प्रमोट करने के लिए काम किया हो, राइट। आर्म्स को डिसआर्मेंट के लिए काम किया हो, आर्म्स को, जो आपके न्यूक्लियर डिसआर्मेंट है, आपकी मिसाइल्स हैं, उनको कम करने का काम किया हो, या फिर डेवलपमेंट, राइट, जिन्होंने सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया हो। तो यहाँ पर डैनियल एंड अलियाबू, इन दोनों को ऑनर किया गया है विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 के लिए, मार्क करके चलेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन म्यूजिशियंस रिकी केज एंड अनुष्का शंकर, इनको नॉमिनेट किया गया 67th ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के लिए, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव, इनको अपॉइंट किया गया उज्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए, एंड राइट 2016 दिसंबर से ये इस पोजीशन में, इनका पहला टर्म था वो। देन इनके बाद अब आ जाते हैं, अगर मैं जापान की प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो LDP लीडर ने शिगुरु इशिबा को रीइलेक्ट कर लिया है एज द जापान्स प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो जापान के शिगिरू इशिबा, और यहाँ पर उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। DRDO के SSPL जो कि है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। इन्होंने 2 कॉम्पाउंड से सिलिकॉन कार्बाइड एंड गैलियम नाइट्रेट की मदद से 2 चीज़ें लॉन्च करी। पहली है सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स एंड दूसरा है गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स। ये आपके बेसिकली नैनो चिप्स में यूज़ किए जाएंगे, राइट, आपके अलग अलग चिप्स में बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। वीमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, कहाँ पर हुई थी? हमारे इंडिया में देखने को मिली थी। ये इसका 8th एडिशन था। इंडिया में भी कहाँ पर? बिहार में ये हुई थी, राइट। एंड यहाँ पर इंडिया ने चाइना को हरा दिया है टू विन द फाइनल, राइट। इंडिया फर्स्ट, चाइना सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है स्पेन के राफेल नडाल। हम जानते हैं वेरी फेमस, वेरी द लेजेंड राफेल नडाल। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया टेनिस से, एंड डेविस कप इनका ये आखिरी इवेंट था। ये कहाँ पर था? स्पेन में। एंड ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी स्पेन से बिलोंग करते हैं, राइट। इनको मल्टीपल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, करेक्ट। एंड 2001 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 15। देन 2008 में इन्होंने 2008 में
बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड भी जीता, देन 4 बार डेविस कप जीत चुके हैं, मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ये जीत चुके हैं एंड मल्टीपल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ऑबिटरी के ऊपर। रिनोन्ड मृदंगम स्कॉलर वरदराव कलमकर राव, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। 88 की एज में आंध्र प्रदेश में इनका निधन हो गया है। मैन मृदगम, ये बेसिकली आपका एक तबला टाइप जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे कब ऑब्जर्व किया गया? 2024 में 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। जनरली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर मंथ, राइट, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके अबाउट दिस पुल्मोनरी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, राइट। देन इस साल 2024 में 20 नवंबर को ये ऑब्जर्व किया गया है एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, नो योर लंग फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूबॉर्न वीक, 15 से 21 नवंबर तक ऑब्जर्व करते हैं एंड नए बच्चे की हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट, उनको वेलफेयर की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड फिलॉसफी डे पर, 21 नवंबर को ये ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड जनरली ये जो डे ऑब्जर्व किया जाता है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 2024 में 21 नवंबर को था, राइट, एंड फिलॉसफी के थ्रू कल्चर, इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं, राइट, कल्चर की एक जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाता है यहाँ फिलॉसफी से। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, इसको रीनेम किया गया एज अजगईबनाथ धाम के तौर पर, राइट, आई रिपीट, इसका नया नाम रहेगा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का क्या? अजगईबनाथ धाम। ये आपका बेसिकली एक हिंदू श्राइन है, एंशिएंट टेम्पल है ऑफ लॉर्ड शिवा जो कि सुल्तानगंज में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर वन लाइनर्स पर। ये तो हो गया मेन कंटेंट। गवर्नमेंट ने अभी भूनीर पोर्टल को लॉन्च किया ताकि ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स के ऊपर काम किया जा सके, उनको मैनेज किया जा सके। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएलआई स्कीम लॉन्च करी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। देन पहला सागर मंथन इनॉग्रल एडिशन है द ग्रेट ओशंस डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ ग्लोबल मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद आईआईएससी एंड एफएसआईडी टू एडवांस साइंस एंड इनोवेशन। सीसीएपीआई इंडेक्स रिलीज किया जहां इंडिया की रैंक रहेगी 10th। एफएओ ने वार्न किया अबाउट ग्लोबल हंगर जो बढ़ गया है 2019 से। एसबीआई ने क्लाइमेट फंड लॉन्च करने की बात की ऑफ 2000 करोड़। देन आईसीआरए ने इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की 6.5% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। डैनियल एंड अली अबू इनको ऑनर किया गया विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 के लिए। दैन इंडियन म्यूजिशियन रिकी कैज एंड अनुष्का शंकर इनको नॉमिनेट किया गया एट द 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 से। अब्दुल्ला एंड अरिपोव इनको अपॉइंट किया गया, अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव, दो अलग नहीं है, सेम है, इनको अपॉइंट किया गया है उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, रिलेक्ट किया गया फॉर द 3rd टर्म। एंड शिगिरू इशिबा ये रीइलेक्ट किए गए हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। देन डीआरडीओ एसएसपीएल ये इनका यूनिट है न्यू दिल्ली में ही, इन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड एंड गैलियम नाइट्रेट की मदद से 2 कंपाउंड डेवलप किए हैं यहाँ पे, इन 2 कंपाउंड की मदद से टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। देन वीमेंस एशियन चैंपियनशिप इसका 8वां एडिशन था, बिहार में हुआ इंडिया में, एंड यहाँ पे इंडिया ने चाइना को हरा दिया फाइनल में। स्पेल्स राफेल नडाल रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस आफ्टर डेविस कप। रिनोन मृदंगम स्कॉलर इनका निधन हो गया वरदराव कलमकारा राव का। देन वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे 20 नवंबर को। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 15 से 21 नवंबर। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 21 नवंबर। एंड बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन ये रीनेम किया जाएगा एज अजगईबनाथ धाम के तौर पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एक को लैंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि जो लोन्स है एमएसएमई सेक्टर को वो और ज़्यादा दिए जा सके, इजीली प्रोवाइड किए जा सके, तो वो है सिडबी। तो सिडबी ने किन के साथ? C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ ये पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल सेटअप किए जाएंगे, राइट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा
तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा, वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर टाई अप करा है। नेक्स्ट, सेबी चेयरमैन मदाबी पुरी बक ने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट डैश, तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस IRDAI से, वो है इंश्योरेंस देखो, इनको ये लाइसेंस मिला है। एंड एक और चीज़, इस लाइसेंस से अब क्या होगा, जो फर्म है ये ऑफर कर सकेगी री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया गोकी के साथ, जो कि स्मार्ट वाइटल प्लस जिन्होंने लॉन्च किया फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी गोकी के साथ पार्टनर किया है। गोकी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, एंड इन्होंने एक वेरिएबल वॉच लॉन्च की जिसका प्राइस रहेगा 3499। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड NRIs हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया, वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर RBI's रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रैवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलके ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी, एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है। बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC, NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी।
तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट। ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड UPI सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है UPI सेतु को, तो UPI सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे UPI से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, EMI ऑप्शन, UPI ऑटो पे, QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स का ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला होमवर्क आपका बताओ कि पहला हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर आ रहा है, लोकेशन का नाम बताओ, इंडिया में आ रहा है। दूसरा, अभी रिसेंटली PM मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर एम्स, कहाँ के एम्स का, कहाँ पर आ रहा है ये एम्स, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ एंड स्टेट का नाम बताओ। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली पहला, चलो मैंने ये तो बता ही दिया, बोडोलैंड महोत्सव लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा, तो वो फर्स्ट एडिशन था, ये याद रखेंगे। ठीक है। इसी के अलावा अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने बैन इम्पोज किया है सोशल मीडिया पे फॉर द चिल्ड्रन जो कि 16 साल से नीचे के हैं। करेक्ट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में बेनिफिट देखने को मिले।